Hi guys, welcome to another episode of Sporting Myths. I have with me Rehan and Waleed as usual. We wanted to start with a huge shout out for the listeners for the responses and questions on previous episodes. Special shout out to Waleed as well, who's talking to us from Faisalabad, given the urgency of our podcast today. Let's look back at day one. Pakistan ended on first day on 259 for five. It was a pretty even contest, but for me, Kamran Gulam scoring an immaculate 100 on his debut was what held Pakistan in the match. Rehan, can I get a summary of what's transpired today? Yes, absolutely. I think पहली चीज तो ये कि जो pitch थी, it behaved much better. There was an even competition between bat and ball, unlike the previous match where there were runs flowing on day one, wickets भी नहीं गिर रही थी, pitch के अंदर कुछ भी नहीं था. There was nothing happening on the pitch as such, and I think that was not good. इस match के अंदर हमने देखा है कि the ball has moved around. It's been reversing as well. There's been spin on offer. So there's an even contest between bat and ball. और जब spin की बात हो तो वलीद इस वक्त फैसलाबाद में and one of the spinners who completely destroyed England back in that UAE series. वलीद आप उनके शहर में हैं तो any thoughts on you being in Faisalabad and watching Saeed Ajmal? Yeah, yes, I have fond memories. एक दो हमारे shoots थे which we did with Saeed Ajmal. What a crazy guy, heart of the dressing room और heart of everywhere that he steps up. और मैं सुबह से ही सोच रहा था when I came over here that he was the spinner we had in our team and really enjoyed him performing over and over again. Plus all the narrative that we have had around the pitch about spin being a key element. So I thought Faisalabad was the place to be today. I have a memory from 2005, I think. फैसलाबाद में मैच था और मैच के बाद आई थिंक टू पीपल फ्रॉम द बार्मी आर्मी गोइंग होम प्रॉब्ली फैसलाबादियों ने उन्होंने गलत रास्ता बता दिया क्योंकि वो चल चल के नवंबर के महीने में ना फुल लाल पीले हुए थे सन पॉइंट एज हेल और 50 लोग उनके पीछे से चल रहे हैं. सो पीक फैसलाबादी मेमोरी थी. If I'm not wrong, I think Inzamam also scored like back-to-back hundreds across innings. But yeah, the narrative was around spin on about the pitch. England had a lot to say about it in the lead up to the match. What are your takes on the England scams feedback and Pakistan using home advantage to the max? I think 80 you should take the lead here. Yeah, so one of the interesting things that I was researching, even though pace had better results because of the reverse swing overall, there were 57 overs bowled by the spinners, which wasn't as effective. But I think the captain handled it really well overall because they understood the task at hand. They measured the pitch. It was turning bit. We're going to talk about the deviation of the Multan service from in comparison to previous pitches as well. But I think what really stood out was how well it was managed overall. And it was a balanced innings. If it wasn't for Kamran Gulam, the early two wickets actually gave us a scare. And we were like, oh no, this is going to start the collapse that we've always been scared of. And फिर आहिस्ता आहिस्ता we clawed back. Abdullah was a disappointment again. So was Shan Masood. We were quite disappointed with how things panned out. एंड जब मैंने वो देखा मैंने कहा इनके ऊपर भी प्रेशर आ गया जो पिछले दिन के सारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं दिस इज ऑल गोइंग टू पाइल अप एंड नाउ this is going to blow up. But credit to Saim, credit to Gulam. They did so well in holding up the fort on their end. And I hope that we can take advantage and at least go for 350 plus by tomorrow and then end it on a better note. But England, I think, has a slight upper hand because they've managed to take over half the players out. But I still feel that there is some opportunity there. So my question to you, Rehan, is in comparison to the spin deviation to previous Multan services, क्या situation है? And हम लोग के जो 3 spinners हम लेकर आए हैं and हम लोग जो अब यहाँ पे हमने एक पैसा कम भी कराया, we'll cut back to that later. क्या हमें result मिलेगा इससे? आई थिंक पहली चीज तो ये कि आपको कंपेयर करना है इंग्लैंड के साथ जो ये तीसरा मैच है मुल्तान के अंदर 2022 में एक मैच हुआ था जिसमें 40 विकेटें गिरी थी दोनों टीमों ने 20 विकेट्स ईच ली थी एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस वी हैव सीन इन पाकिस्तान सिंस क्रिकेट रिटर्न टू पाकिस्तान फुल टाइम. तो उस मैच के अंदर जो डिविएशन थी वो रफली 3.5 से 4 डिग्रीज के दरमियान में थी और आज के दिन भी पहले दिन जो स्पिन डिविएशन थी वो 3.5 से 4 के दरमियान में थी. दैट्स अ गुड साइन. द पिच इज कीपिंग अ लिटिल लो. उतनी तेज स्पिन नहीं हो रही बट देयर स्टिल स्पिन which is a good sign. But the thing that's weird is there was a lot of reverse swing on offer, and that's not per se weird.
क्योंकि आपने सरफेस शेव ऑफ कर दिया और उसके इर्द गिर्द जो स्क्वायर है वो भी शेव ऑफ हो गया. एथलेटर ने भी ये बात की थी आई थिंक अबाउट शेविंग ऑफ द स्क्वायर एज वेल. तो उससे क्या होता है, बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाती है. एंड पाकिस्तान आर ओनली प्लेइंग वन पेसर विच माइट कॉज एन इशू टू पाकिस्तान. आइडियली तो आपका बैलेंस्ड अटैक होना चाहिए कि आपके पास इवन ऑन स्पिन पिचेस यू कैन लर्न फ्रॉम अ टीम लाइक इंडिया. इंडिया ने आई थिंक 2023 ऑनवर्ड्स आई वाज लुकिंग एट स्टैट्स, तो 62 विकेट्स उनके फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, ऑलमोस्ट डबल उनके स्पिनर्स ने लिए हैं, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स की एवरेज 26 से कम की है. और 62 जो उन्होंने विकेट्स लिए उसमें 40 बोल्ड या एलबीडब्ल्यू है, विच मीन्स दे अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड रिवर्स Yeah. कैसे यूज करनी है. दे डू इट रियली रियली वेल. एंड आई फील कि पाकिस्तान जस्ट मिस्ड अ ट्रिक देयर. आई होप कि स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं कि व्हेन द बॉल स्टार्ट्स कीपिंग इवन लोअर एंड क्योंकि एसेंशियली दिस इज अ डे 6 पिच बिकॉज दिस इज बीन कैरिंग ऑन. और Yeah. दूसरी चीज ये बात करना कि whenever a foreign team comes to an Asian country they complain about the pitches all the time. I'm glad they're complaining finally. पहले मैच में कोई complain नहीं आई थी. I'm glad that they're complaining now. At least there's something there. Yeah, we're not offering it on a Unlike, platter. yeah. I mean, unlike like previous matches where you just come in and you just destroy the bowling and there's no competition. I mean, I'm all for baseball and playing fast cricket, but Test cricket की खूबसूरती है कि उसके अंदर बैटर बॉल का even competition होना चाहिए. And I feel this pitch offers that. And even if Pakistan don't end up winning, the idea of this pitch is right. I think the playing 11 could have been better. Let's see how the test match pans out. But I feel Pakistan has a slight advantage right now. 80 you said that England might do. But I feel 260, roughly 260 for 5 with Salman Ali Agha and Rizwan. And you have a much longer batting lineup in this match as well because Sajid Khan is batting at number 10. So Yeah. Pakistan can hope to score, 350 around about that figure. And then on this pitch, you can basically entice England to play, those big shots against you and take deeper fields because they will not Yeah. stop attacking. So, I mean, that's one way to get them out. And let's see how that pans out on day 2. But I do feel that this pitch will get even tougher for batting as the match progresses. रेहान भाई, मैं I'm so तो ये glad देख that रहा हूँ you. कि sorry, I'm seeing England went all out on spin. I mean, 50 plus over तो खाली लीच को चिमड़ा दिया उन्होंने. लीच actually has become a leech, and then Shoaib Bashir also bowling a good ton of overs. I just wanted to understand that they have a depth on spinning. They have like 2-3 players जो ग्राउंड में spin पे खिला रहे हैं. Even Root played a few overs. Do we have the requisite strength for our spinners? Because I just want to understand how much would England know about our spinners? Would they be mystery spinners for these guys? Or are these people walking in with the team with a lot of confidence? Yeah, they're gonna have to rely on the pitch. I think, Wali, that's a good question. I think, first of all, the Pakistan has a leg spinner in Zahid Mahmood. Pakistan has a left arm spinner in Noman. Pakistan have an off spinner in Aga. Pakistan also have a finger spinner, carom spinner in Saim. And Sajid has an off spinner. So, the options, the amount of options Pakistan has, I think, मुझे हमारी history में नहीं याद कितने spin options हो. Quality का obviously question mark है कि are they as good as the previous spinners that Pakistan has had in the past? Like obviously they're nowhere close to Saeed Ajmal's level, the player you were talking about earlier. But the other thing here is, and 80 you wanted to mention this as well, कि 80, when's the last time these guys played first class cricket? The spinners that have been added to the squad. It's been 9 months. I want to highlight this. It's been they're considered our experienced lot, and it's been 9 months since they played first class cricket. Oh God! So Wali, there you have it. 9 months since first class cricket. तो उसके दरमियान में हमने Champions Cup करवाया जो कि one-day format के अंदर था. तो I don't know if these guys have had enough bowling under their belt in 4-day cricket or with red ball cricket. There's a vast difference between bowling with the white ball and with the red ball. And I feel कि वो चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी और उनको कैसे मैनेज करना है. And the other thing about here is कि Saim की, I wanted to talk about Saim's innings as well. Saim is generally a very attacking, very free flowing batter. और जिस तरह की उसने आज innings खेली, I think that Pakistan fans should take great heart from it. उसने अपने मैच के बाद इंटरव्यू में बोला कि the ball was keeping low, it was difficult to score on such a surface, but he basically changed his game. और इससे आपको adaptability पता चलती है. So I think that's a great sign for Pakistan. And one of you, I think, wanted to talk about Kamran Gulam की struggles और किस तरह वो what he's achieved in domestic cricket. So Yes. if you guys want to highlight that. So Kamran Gulam has been working extremely hard for the last 3-4 years. Fitness-wise, he's been excellent, and in domestic cricket, he's been really embedding his name. And the thing about him is the fact that really stands out to me is that he's the 13th player to record a century on Test debut for Pakistan.
And this is the Hall of Fame lineup with names such as Javed Miandad, Salim Malik, Azhar Mahmood, Yunus Khan. So the fact that somebody who's been piling on the runs in domestic wasn't really acknowledged in that period, but comes through and scores a ton, like a fantastic ton, in like a very good, in a very difficult circumstances. I am completely blown away by the confidence, and even by just like there is no point in time where I felt that he wasn't sure of himself, or there is no point where I felt like any shot was just a nervous wreck या कोई edge हो गया तो बच गया या speaking of which Rizwan वाला जो incident हुआ था, but like there's nothing, constant assured cricket, and I'm very proud of like a debut. For a debut, this is probably one of the best I've seen. What happened on like why did they completely miss the plot on the Rizwan? Why didn't they appeal? I think शायद एक बंदे ने appeal किया था. I don't know what was going on. Yeah. I think वो किसी को भी आवाज नहीं आई. I think Potts ने सिर्फ अपील की थी और Root was saying no, 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 not out. Stokes was asking a lot of people. I think no one heard it. Even Potts भी कोई इतने confident नहीं लगे. But once a Sneeko came on तो उस पे नजर आया कि edge थी. So I think that's where England missed a trick. But this happens like Test cricket के अंदर the amount of DRSs that actually go in your favor are not as high. But you do regret it when you see on the big screen and see कि यार ये तो out था और कल अगर रिजवान 100 कर जाए तो obviously there will be that regret, and Potts पर told you so वाली बात भी करेगा. And one more thing, I wanted to share a very interesting story about Kamran Ghulam. So Kamran Ghulam PSL में PSL 1 वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे. So at the time he was a left arm spinner who could bat at number 5, 6 or 7, and he had all these innovative shots. He had the ramp, he had the reverse ramp, and he was thought of at the time as a left arm spinner who could bat and who was an innovative player, a T20 player. And over the years, the way that he's changed his game is exceptional. I mean, this guy was thought to play really fast cricket and all of that, and he's gone from that to a technically correct batter who consistently piles on the runs and has gone from a shorter format batter to a longer format batter. और उसके अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी improvement किया, it's been remarkable. And this is what I always say कि प्लेयर्स जब अर्ली अपने करियर में होते हैं ना तो वो काफी कुछ सीख रहे होते हैं, तो उस वक्त अर्ली उन पे लेबल लगा देना कि ये तो यही है, that I think is detrimental to a player's progress. And Kamran Gulam is a perfect example of someone who's worked extremely hard. He's been piling on the runs in domestic cricket, and the way he's changed his game from a guy who used to ram, paddle, and play all those shots and bowl left arm spin as his first option to go into a top quality batter in domestic cricket. That's I think a lot of hard work, a lot of dedication, and very clear image in his mind. Like उसने बहुत clear image अपनी जेब में बनाया था कि this is what I want to do. And उसके बाद he ended up winning PSL with Islamabad United in 2016. Then he won a PSL title with Lahore Qalandars as well. So it's like his progress over the years and how he's reinvented himself is something that every player can learn from. And it's so good to see someone from domestic cricket के वो 29-30 साल की उम्र में आके इंटरनेशनल खेल रहा हो और वो 100 कर दे. पाकिस्तान में तो बहुत रेयर होता है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में 28 साल का प्लेयर हो तो उसको कहते हैं यार ये तो रिटायरमेंट के करीब आ रहा है. बट अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे लेट डेब्यूज होते हैं 28-30 ईयर्स की एज के अंदर, स्पेशली बैटर्स के, वो वाली कंट्रीज के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है ऐसे प्लेयर्स की. एंड आई होप कामरान गुलाम गेट्स द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स. और एक आखिरी चीज मैं कामरान गुलाम पे कहना चाहूंगा. लोग कहेंगे कि जी उसने रैश शॉट मारी, उसने निकल के शॉट मारी, बड़ी रैश शॉट थी, आउट हो गया. उसने उस शॉट से पहले 28 स्कोर उसी तरह निकल के मार के स्कोर किया था. That's his strength. That's the shot he's played in domestic cricket. अगर आप उसको domestic में follow करते हैं, that's his get out of jail shot. तो अगर वो उस तरह out भी हो गए हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं. उसने 118 स्कोर की है. Please appreciate the fact that he was coming into this match after so much pressure. Like बाबर की सारी हमने discussion पिछले episode में की थी. All of that, and he scored a century. I mean, it's just an unbelievable achievement. And वो जो स्पोर्ट्स में स्टोरीज होती है ना which you want to see over and over again, I think कामरान गुलाम, sorry, I keep saying Akmal, कामरान गुलाम की आज जो इनिंग्स थी वो is testament to the fact that he reinvented himself and the hard work that's gone on for years and years, and he's been on part of the squad for so long, hasn't gotten his opportunity. So kudos to him, hats off to him, amazing innings. Why am I not surprised कि इस the story from rags to riches में जो पीछे mentor और coach होता है ना, वो इन्होंने fit कर दिया कि रिहानुल हक का हाथ था. PSL 1 में मैंने choose किया था, PSL ने इसको player बनाया. I'm not surprised how you took credit for that. ये मेरे हाथ
ये मेरे हाथ देखो, मेरा 0% क्रेडिट है। मैं तो कामरान गुलाम को समझता था लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि ये सारी शॉटें मार सकता था। मुझे नहीं लगता था कि वो एज अ बैटर डेवलप हो सकता है एट दैट टाइम। एंड व्हाट ही इज डन इज ऑल हिम, नॉट मी। प्लीज मुझे और गालियां मत पड़वाओ वलीद, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ कर दो। नहीं, so the relationship that you and I have, I can call you out for what it is. और I think कोई 10 साल में पहली दफा रेहान भाई के हाथ जुड़वा दिए। That's not it. That's not it. So, what I think what you're saying is really genuine, right? कि उस पे it was this pressure not just from like कि मैं कहाँ पे किस circumstance में आके खेल रहा हूँ, but who am I replacing as well on the team? And I think there's no better way to announce yourself and put that pressure off you rather than doing what he did. Um, and this is what I was talking about in the last episode as well, that once the results coming और जब break नहीं होती और actual match हो रहा होता है and you are in it, so that creates the space as well for the camp, and I hope it creates the space because the one thing is for sure, it seems like this is going to be a 20 wicket match and it seems like there's going to be a result coming out, and then I think boys are in it with the fight. एक चीज़ I want to understand from you guys, पिछले एपिसोड में 60 मिनट में 40 या 45 मिनट हमने स्पिनर्स और पिच के बारे में बात की थी. आई थिंक सम पीपल लिसन टू इट एज वेल. आई थिंक द प्रेशर या जो भी था फीडबैक लूप इट वर्क. Azim Mahmood is also saying that we're walking into the match with a plan, and the plan was always spinners, but I don't know why they played the other pitch the last time around. Or Bangladesh against, he was saying faster. But I really want to understand that reverse ka element is something that we never discussed, but it came into the play today. How do you see reverse impacting the rest of the match, both for the rest of our innings and also for England when they come out? And do we have the firepower on reverse? I think 80, you should start off with what you saw in the England innings. You had interesting points on that. What I want to really start with initially is can we go back a little further and the statement by Michael Atherton जो उसके अंदर दी है, and Yeah. let me just like quick read out. Although Pakistan has gone for 7 spin options with just one seamer, what they've actually done before this game is cut the pitches on either side of the main strip. But Pakistan doesn't want to help reverse swing. They've only got one seamer themselves. So there's an element of confusion around the tactics. Once again, completely highlighting कि what shambles this whole thing has become once again. हम लोग को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था पिछले एपिसोड में, which was something that we also want to discuss, रेहान, कि लोग बार बार कह रहे थे कि यार पिच से नहीं फर्क पड़ता, पिच से नहीं फर्क पड़ता, आप लोग हर चीज़ पिच के ऊपर क्यों डाली जा रहे हैं. Let me just clarify कि the match that you're saying today is because of what the conditions are, and I'm hoping that we get an advantage out of it. But the problem is that Pakistan, again, does not have enough seamers to be able to battle this out. And in my head, and जो मैंने पहले भी बात की थी कि even though 57 out of 90 overs were played by spinners, but वो जब भी सीमर का element लेकर आते थे, it was so well managed कि they managed to get a wicket out of it. We 45th over के पास जाके कहीं पे like it started reversing, एंड देन उसके बाद हमने देखा है शुरू में कामरान और साइम को दोनों को तंग कर रही थी, एंड हम लोग तब भी ये बात करते हैं यार ये पाकिस्तान के पास अगर एक और पेसर होता मे बी दिस वुड हैव बीन लाइक समथिंग डिफरेंट दैट वी वुड रियली we could have used. But then Saim got dismissed because of it, and then reverse swing got another wicket, and that's when we realized कि like, oh, this is a tricky pitch. And you know what we couldn't figure out was कि अच्छा यार ये लोग किस तरह manage कर रहे हैं. We thought कि like they're going to use their pacers a bit more, but they didn't. जो जिस तरह उन्होंने utilize की अपने पूरे bowling lineup को, it was excellent, and I was very impressed overall. But my concern now is कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक होगा पेसर, एंड हमने इसको किस तरह लेके चलेंगे गिवन द फैक्ट कि डू यू थिंक कि अभी कल तक इसकी एवोल्यूशन इतनी हो जाएगी कि और स्पिन होना शुरू हो जाएगी और बैठेगी या और उठेगी, क्या उसका बनेगा रिजल्ट? I think technically, so yes, so it should get worse for batting because it's again, as you mentioned, used pitch. उसके अलावा yes, again मैंने शो के स्टार्ट में बात की थी, इस एपिसोड के स्टार्ट में, कि you need a balanced attack and दो पेसर्स होने चाहिए. अगर नहीं भी हैं तो then there's heavy reliance on pacers and on your spinners, and also आमिर जमाल के ऊपर extra pressure है because अगर उसे रिवर्स भी करवानी है and he plays that enforcer role as well, जो कि बाउंसर वगैरह भी करवाता है, तो उसके ऊपर एक added pressure है. Ideally तो आपके पास दो होने चाहिए. अब नहीं है तो आपने उसमें मैनेज करना है. दूसरी चीज़ ये है कि जब यही बात एथरटन या नासिर हुसैन करते हैं तो everyone says कि okay fine, they're right, but that's the thing, that's the validation that people need. But what's happening in the Pakistan Cricket Board now is right now is a complete mess.
Look at what's happened over the last 6 months. Look at what's happened over the last 2 months. एंड जहां तक अक्सर लोग ये बात करते हैं, काफी लोगों ने कहा पिच क्या होती है, पिच किस तरह मैटर करती है, जब अगर आप यॉर्कर मार सकते हो तो पिच बिल्कुल मैटर नहीं करती. फास्टेस्ट बॉलर आई एवर सीन इन माय लाइफ इज शोएब अख्तर. उसके डेडली यॉर्कर शायद इस दुनिया में किसी का होता हो. एंड शोएब अख्तर एवरेज अबव 43 इन ऑस्ट्रेलिया. तो अगर वो हर बॉल पे यॉर्कर पे आउट करते तो उनकी 43 की ऑस्ट्रेलिया में एवरेज ना होती. तो पिच डज प्ले अ पार्ट इन वेदर द बॉल इज गोइंग टू रिवर्स, इन वेदर यू आर गोइंग टू गेट विकेट्स और नॉट. सिर्फ यॉर्कर करवा के आप आउट नहीं कर सकते. एंड शोएब अख्तर का करियर इन ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. तो पिचेस डू प्ले अ पार्ट. और दूसरा, जिनको लगता है कि पिचेस बिल्कुल पार्ट नहीं प्ले करती, वो प्लीज डेविड वार्नर का रिकॉर्ड उठाकर देख लें. वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड. उसका टेस्ट मैच में रिकॉर्ड उठा के देखें इन ऑस्ट्रेलिया एंड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया. अगर पिचेस मैटर नहीं करती तो उसका जितना अच्छा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में उतना ही बाहर होता. तो पिचेस डू मैटर. एंड होम एडवांटेज यही होता है कि जो आपको चीज सूट करती है आप उसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे. तो पाकिस्तान इन थ्योरेटिकली तो फायदा उठा रहा है जिस तरह की पिच बनाई है. बट आई स्टिल फील पाकिस्तान लैक्स अ फास्ट बॉलर एंड दैट माइट कम बैक टू हॉन्ट पाकिस्तान. एंड अगर आपने इतनी ड्राई पिच बनानी थी, एज इन आई डोंट वांट टू बी ओवरली क्रिटिकल, द पिच आई थिंक इज राइट. आई थिंक द सिलेक्शन कुड हैव बीन बेटर. एंड दैट्स द थिंग कि आपकी बॉलिंग जब फुल फ्लैट पिचेस होती हैं तो हम नसीम और शाहीन बेचारों को ओवर करवा करवा के उनके कंधे निकलवा देते हैं, और जब ऐसी पिच आती है तो वो दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं. तो I mean that's another thing that we'd have to look at. But yes, you need conditions that support your own bowlers. You don't need conditions that support the opposition's batters. Yeah. So let's see how England fare here. और एक और मुझे ना बहुत एक ओल्ड नैरेटिव है जिसपे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि एशियन प्लेयर्स जो है ना वो स्पिन अच्छी खेलते हैं और स्वीपें बहुत ज्यादा मारते हैं. यस, एशियन प्लेयर्स प्ले स्पिन वेल, बट स्वीप्स जो हैं वो ज्यादा गोरे प्लेयर, ज्यादा फॉरेन प्लेयर ज्यादा एशिया में आके मारते हैं. और वो अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम में सारे प्लेयर ही तकरीबन स्वीप और रिवर्स स्वीप मार लेते हैं. पाकिस्तान की टीम में रिजवान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, Yeah. these are guys who play the sweep well. But other than that, sweep Asian players do not use the sweep as much as foreigners coming here. Our attack normally is to come down the track and attack. And whereas for them, if they don't understand कि ball कितनी spin हो रही है, किस side पे spin हो रही है, if they can't read spinners, so then they start sweeping. So I think that narrative also is needs an updating. And there's enough data to prove that. और आपने स्टोक्स की कप्तानी की बात की, I'm sorry, I'm going on a rant. बट स्टोक्स की कप्तानी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एवरीवन विल थिंक कि वो अम्ब्रेला फील्ड जो है वो बड़ी कोई एक उसकी फंकी फील्ड है. देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. सो अगर आप डेटा देखें तो वन ऑफ द वेज टू डिसमिस साउथ शकील इज टू गो अराउंड द विकेट विद अ फास्ट बॉलर, पिच इट ऑन फिफ्थ एंड फोर्थ स्टंप. एंड आप अपना, अगर लो पिच है तो Yeah. आप जो है अपनी स्लिप आगे ले आए, अपना कीपर थोड़ा आगे ले आए, और जो फील्ड है ना बिहाइंड स्क्वायर की जगह इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर फील्ड रखें, उसको कवर ओपन दें ताकि उधर से मारने की कोशिश करें. एंड देयर इज अ चांस ऑफ एन एज, एंड इफ द बॉल कम्स बैक इन देन देयर इज अ चांस ऑफ एलबीडब्ल्यू. देयर इज एनफ डेटा ऑफ दैट अवेलेबल इफ यू कैन सी दैट. तो उसके मुताबिक ये फील्ड सेट हुई थी. तो ये नहीं है कि कोई फंकी फील्ड है. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक. एंड स्टोक्स के अगर आप इंटरव्यूज भी सुने पहले तो ही हैज सम इंस्टिंक्ट. He goes to the analyst, he talks about his instinct, then the analyst shows him the videos, and if the videos and his instinct match, then they apply it on the field. And that's what's been happening in baseball की Yeah. सक्सेस की हम बात करते हैं. Yes, batting is funky, but उनकी bowling plans are based on data analytics and their strengths. Like उनके पास 150 वाला बॉलर नहीं है तो वो 150 वाली बॉलिंग करवा के किसी को आउट Yeah. करने की भी कोशिश नहीं कर रहे. वो लोग इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर फील्ड ले रहे हैं. इवन फास्ट बॉलर्स के ऊपर बॉल रिवर्स हो रही है तो जरूरी नहीं है आप स्लिप्स 2 या 3 खड़ी करें. You can have a short mid 100%. off, you can have a short cover and get the wickets in. और साइम भी उसी तरह आउट हुआ. तो credit to them के they do so much research and then apply it on the field. Like it's not funky, it is logical, and that's, I hope that Pakistan also chooses logical options rather than go full funk. No, 100%. Because I was surprised because bar the commentary, ESPN, Cricket Info, ये सारे जो थे ना, they kept referring to it as कि यार England then had to get funky with the reverse swing and the fielders in front of square. And I was like, यार मतलब I'm sure there's a tactical, there, as we've discussed previously, there was a logical reason behind it. But for them to just Yeah. like completely label that as a कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं इस तरह से was a bit strange या for मैं me. आपको सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. सो सबके पास आई एम श्योर अब तो सब चैट जीपीटी यूज करते हैं, ठीक है. चैट जीपीटी के अंदर ना आपको मैं कहता हूँ आप डेटा एंटर करें ऑफ अ प्लेयर गेटिंग डिसमिस्ड इन अ सर्टेन एरिया, एंड देन यू गिव चैट जीपीटी एग्जैक्ट कमांड्स के यार ये इसका डेटा है, ये इसकी वीडियोस हैं, आप उसको भेज चैट जीपीटी को फीड करें और उसको कहें कि हमें इसके खिलाफ फील्ड प्लेसमेंट निकाल के दो. तो आज ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है.
तो वो बेसिकली बड़ी एक्यूरेट फील्ड प्लेसिंग, और जो आपकी इंग्लैंड की फील्ड प्लेसिंग देखें तो उसके करीब करीब ही आता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दिस इज लॉजिकल, दिस इज नॉट कि रैंडमली उसने सोचा कि यार अम्ब्रेला फील्ड सेट करेंगे आज तो हम दुनिया को दिखा देंगे. दिस इज अ वेरी लॉजिकल फील्ड, एंड you don't always need slips to be attacking. You can have a short mid wicket, a short cover. That's also an attacking field if the ball is reversing. If the ball is not going to carry to slip, so how is that an attacking field? एंड व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने अपनी स्लिप थ्रो और ऊपर लिया, उसको हेलमेट पहना दिया. सो Yeah. इंग्लैंड की मैं कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ, मुझे को मजा नहीं आ रहा उनकी इतनी तारीफ करके, ना मुझसे हजम होती है इतनी तारीफ उनकी. तो इसलिए आई एम होपिंग दैट पाकिस्तान एंड्स अप विनिंग दिस टेस्ट मैच इवेंचुअली. बट यू हैव टू अप्रिशिएट एंड गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, एंड दे डिजर्व क्रेडिट फॉर देयर प्लानिंग. Yeah. मेरा टेक अवे था कि इंग्लैंड इज यूजिंग चैट जीपीटी टू सेट देयर फील्ड्स. तो द गुड थिंग इज कि वी वोंट हैव टू पे एन एनालिस्ट नाउ. हम भी चैट जीपीटी पे डाल देते क्या करना है, बट सारी अच्छी बातों में रेहान भाई एक आपने चुस मार दी. एनालिस्ट हैज टू फीड दैट इंफॉर्मेशन जो चैट जीपीटी ने खुद फील्ड सेट नहीं करनी है. आप उसको पहले आप उसको वो निकाल के दोगे कि इस बैटर की ये वीकनेस है तो इसके खिलाफ हमें क्या प्लान करना चाहिए. दैट स्टिल कम्स फ्रॉम एन एनालिस्ट, दैट डज नॉट कम फ्रॉम चैट जीपीटी. I was Okay, saying I was cool. experimenting with it, so I realized this is the case. So I think let's move away from this more technical and analytical discussion जो कि AI solve कर सकता है, to people management and organization management, some of my favorite subjects, and walk us through what happened on on Fakhr's situation. I mean, him coming out to back a fellow teammate, and I think the shit has hit the fan over there. I completely agree, Waleed. I think वो जो फखर ने उसके बोला उसके बाद आया कि उसको शो कॉज नोटिस इशू किया गया जिसमें उसको ये कहा गया है कि यू हैव पुट द गेम इन डिसरिप्यूट. आई डोंट नो हाउ दिस इज पुटिंग द गेम इन डिसरिप्यूट. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. I mean, how is this putting the game in disrepute? Someone feels something, you like it, you don't like it. That's your opinion, but he also has an opinion, and if he voiced it, I don't think he's saying gun to your head कि इसको खिलाओ ही खिलाओ. That's not what he's saying. It's Yeah. frustration that's been put out in a tweet. But how is that putting the game into disrepute? Has he been caught working on the ball, ball tampering करते हुए पकड़ा गया है? Has he put the game in disrepute by having some You're fixing right. There are allegations? real life No. examples of Yeah. Pakistani players putting the game into disrepute and the nation into disrepute. This I I don't think mean, yeah. qualifies as such. How is Pakar putting anyone in disrepute? This is not putting the game in disrepute, so I don't get it. I don't get the like अगर show cause notice भेजना था तो I think there are other reasons जो कि आप कर सकते थे, but putting the game in disrepute, I mean that's too much यार. ये तो doesn't make sense to me, and it's और unfortunate I guess. डेकोर और डेकोरम की बात करते हैं. सो व्हाट आर द एवेन्यूज अवेलेबल? अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होता एंड आई हैड अ फीलिंग लाइक दिस अबाउट वन ऑफ माय फेलोज बीइंग ड्रॉप्ड, या फिर जनरल फ्रस्ट्रेशन होती है अबाउट द टीम, हाउ वुड आई हैव Yeah. रूटेड माय कंसर्न इन दैट सिचुएशन, एंड व्हाट इज द पॉसिबल ऑप्शंस दैट आवर प्लेयर्स हैव विद देम टुडे? यार एक तो ये चीज है कि अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या इंग्लिश प्लेयर ऐसी कोई बात ट्वीट भी कर देगा तो उसके ऊपर इतना रिएक्शन नहीं आएगा कि तुम डिसरिप्यूट कर रहे हो गेम की. और दूसरी चीज ये उनके पास प्लेयर यूनियंस अवेलेबल होती हैं, तो दे कैन गो टू द प्लेयर यूनियन एंड एक्सप्रेस कि यार ये हमारे मसले हैं तो इनको आप सॉल्व करो एज अ कलेक्टिव. तो उसको बड़े स्ट्रक्चरल तरीके से वो फिर वो चीज जाती है क्रिकेट बोर्ड के पास. क्रिकेट बोर्ड के पास वो एक प्लेयर क्रिकेट बोर्ड से आर्ग्यू नहीं कर रहा होता, वो एक पूरी प्लेयर यूनियन होती है जो आर्ग्यू कर रही होती है. ऑब्वियसली इफ इट्स अ डिसिप्लिनरी इशू, जिस तरह की बॉल टेम्परिंग होगी या इस तरह की कोई चीज होगी, तो उसमें तो डायरेक्ट प्लेयर उसमें प्लेयर यूनियन क्या ही कर लेगी. लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हो तो उसमें प्लेयर यूनियन होती है. And then the player union talks to the cricket board about frustrations or rights के issues या image rights के issues या all of those issues. That's a player union's job to go and talk to the players body, players association, whatever you want to call it. That's their job to go and talk to the cricket board. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, तो इवेंचुअली यही होता है कि इट्स so vague कि you can call it putting the game into disrepute, which I still don't understand. How is this putting the game into disrepute? बट ये हम पहले भी डिस्कस किया था, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज द गन्स गोइंग टू नाउ टर्न टुवर्ड्स Yeah. फकर, which has happened. I just It's unfortunate. my 2 cents. You again, I'll tell you, like मुझे लोग कहेंगे कि कामरान गुलाम ने 100 कर दिया. I'm very happy for him, and I've been one of the advocates of him having him in the team, not at the expense of someone else, but I've been his advocate for the longest time that he should be in the team and domestic performer and all. But this is not on Kamran Gulam, and this is not on supporting one person or not. It's just that someone's
said something they feel, और उसके ऊपर आप कैसे कह सकते हो कि यार this is putting the game in disrepute. And I think just a small thing that I want to also add along is the people celebrating Fakhar Zaman being show cause noticed because of this and being like कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए जो बोलते हैं इसने तो कोई रन नहीं बनाया पिछले 10 मैचेस से तो इसके साथ तो यही होना चाहिए इस तरह होना चाहिए. I would just like to highlight the fact that this is a moral issue. उसकी वो उसने ये नहीं कहा कि बाबर को क्यों निकाला और मुझे क्यों उस टीम में मेरी जगह क्यों नहीं बन रही है इस तरह से. It's just the bare empathy being shown कि यार इस तरह की है ज्यादती हुई है, this shouldn't be the case, is a separate issue and his form and his place in the team is a separate issue. So let's not try to amalgamate the two and make this one big issue. It's not. Yeah, एंड खैर yeah. वो तो मतलब लाइक इस तरह के ओपिनियंस आते हैं और जाते हैं. आई थिंक एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें. यू आर प्रॉब्ली बेटर फॉर इट ये बट वलीद आई से थिंक सारे इन कह रहा इन था, दूसरा आपको एक्सप्लेन तो करो. यस सर, मेरा जाती ख्याल है कि मेरा जाती ख्याल है कि अगर कोई ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर टीम में आना है तो एक फिटनेस टेस्ट पास करना है, इट्स लॉजिकल. और ये एक्सपेक्टेशन कि अगर 10 मैच से नहीं स्कोर किया तो ड्रॉप होना है, इट्स लॉजिकल. आई थिंक लॉजिक पे यू कांट से नो टू आइदर ऑफ दीज requirements. I can really empathize with the board and even on what you're saying on Fakhar. मेरे ख्याल में अगर बोर्ड कह रहा है कि decorum है and you should maybe air your grievances somewhere else and not publicly, I empathize with the board honestly. But probably I think where I see logic in your argument is कि how do you phase in those standards? How do you make it in a way so that the players don't feel frustrated कि शायद हम सारी चीजें हमारे से expect कर रहे हैं और हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा. But I honestly empathize with the board on all three of these. अच्छा, एवरीवन, ऑल आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं आपको वलीद का जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्विटर का भी और इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा. तो अगर आपने इनको कुछ कहना है और आपने इनको अटैक करना है तो प्लीज़ इनकी पर्सनल प्रोफाइल पे जाके अटैक करें. प्लीज़ हमारे कमेंट्स में जो है वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, लेकिन वलीद की पर्सनल बायो वगैरह मैं सब आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो प्लीज़ गो अटैक वलीद फॉर हिज एम्पैथी एंड एवरीथिंग. So that's it from me. For the organization, I would love to hear from people saying कि नहीं fitness test. Yeah, I would love to hear from people कि नहीं unfit players को टीम में ले आए. I would love to hear from people कि जो नहीं परफॉर्म करे उसको टीम में चलाते रहें. फिटनेस की मैंने उसकी फॉर्म की बात ही नहीं की है यार. भाई फिर आप लोग लगता है मेरी बात सुनना नहीं चाहते. Please send a show photos to Waleed Hammer for putting the show I swear. Yeah, please. Wow. I think it's time to put my legal degree to use for something, and I'll start with sending Waleed the show cause notices. So, acha, this is done and over with, and I think moving on, Rehan, quick 2-line summary for what to expect tomorrow. दुआ, हिम्मत, ब्रेवरी, जज्बा, पाकिस्तान जिंदाबाद. I think we should wind up on that. 92 World Cup repeat, हाँ? जज्बा. नहीं भाई, 92 इधर किधर 92 तुम टेस्ट मैच में ले आए हो भाई. तुम्हें शो को नोटिस आ रहा है और तुम्हारी बायो में जरूर. Yeah. Chalo, I think this is where we're going to end it today. Thank you guys for tuning in. Make sure to like and subscribe. We'll be back soon. Bye-bye.